हेलो। हेलो राधिका। सर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे ना अपन। केमिकल बॉन्डिंग यस पढ़ रहे सर। हैं। ठीक। देखो, अभी अपन क्या कर रहे थे, अपन फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे, है ना। केमिकल बॉन्डिंग अपन का ये लूज डॉट स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ। आवाज ठीक से क्यों नहीं आ रही? अभी बोलना एक बार राधिका कुछ। बोलो सर। हाँ अभी ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? यूजुअली पता है अपन क्या करते हैं, अपन अपन लोग एक्चुअली हमें जब भी कोई स्ट्रक्चर पता होता है ना, जैसे सपोज NO2 प्लस पता है, तो हम एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि देखो NO2 के ऊपर प्लस चार्ज तो पता ही है हमें, ये है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किस एटम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, किस पर्टिकुलर एटम के ऊपर। हम यूजुअली ये सोचते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है हमें नहीं पता, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। अब ये जो फॉर्मल चार्ज जो होता है, ये फॉर्मल चार्ज तुम तभी कैलकुलेट कर सकते हो किसी एटम के ऊपर इन ए मॉलिक्यूल, जब तुम्हें पता हो कि उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, पहले तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला दे देता हूँ। FC फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हम्म। तो सर मैं फिजिक्स और मोशन में क्लिनिकल राइज कर रही थी पहले, उसमें मुझे मोशन इन। एक चीज ही सम प्लेन अच्छा। वेक्टर्स वाला पार्ट करते थे, तो उसमें मुझे मेथड ऑफ कंपोनेंट्स ही समझ आया था मेथड ऑफ कंपोनेंट। फॉर वेक्टर एडिशन। अच्छा वो। हाँ, ओके। मतलब वो कंफ्यूजिंग सा लगा था ये। वो रिजॉल्विंग होती है राधिका, फोर्सेस की। अच्छा, तो उसमें लाइक उसको यूज कैसे करना वो समझ नहीं आ रहा था इसको। देखो, वैसे एक्चुअली हम उसी को ही यूज करते हैं, उसको ही अपन यूज करते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें एक्चुअली ना, ये लोग फिजिक्स में, क्योंकि तुम छोटी क्लास में हो, तो तुम्हें क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया जाता है। जैसे सपोज फिजिक्स में तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक तो ये ए है और एक ये बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो इसका। अब हाँ, वो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता पैरेललोग्राम ले सकते हैं, है? हाँ वो पैरेलल लॉ। लॉ से। अब वो क्या होता है, वो ये लोग बोलते हैं कि R² इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है। हाँ। ये
और दूसरा ये बोलते हैं कि अगर रिजल्टेंट का जो एंगल होगा फाई, वो क्या होगा, टेन फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी बी कॉस कॉस थीटा, थीटा। ये होता है। ये तो बेसिक इन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया, पर एक्चुअली ये चीज पता है, ये लोग याद करने को बोलते हैं, पर ये आता कैसे है, ये भी पता होना चाहिए। ये जो आता है ना, ये फॉर्मूला जो बन के आता है, ये बनता है बाय यूजिंग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से, मतलब मेथड ऑफ कंपोनेंट्स जो है ना, उससे ही। क्या? कैसे? एक जो कॉन्सेप्ट हमें पता है वो ये पता है, यानी कि ये दिस इज दैट द आई एम अच्छा, टेलिंग दिस वन ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस फॉर्मल फॉर्मल चार्ज। तो ये वाला तो मैंने और डिराइव भी करा है। लाइक उसमें हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और फिर वहां पे एक नहीं 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 एक्सटीरियर एक ट्राइंगल बनाएंगे। नहीं नहीं राधिका, बराबर। वो नहीं, पैरेललोग्राम बना के नहीं कर रहा मैं बस मैं तो वैसे कर रहा हूँ कि मैं बस तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जब भी तुम देखो, ये तो जानते ही हो ना कि जैसे सपोज तुम्हारे पास कोई भी एक वेक्टर होता है ऐसा पी, हम्म, और अगर ये किसी भी एंगल से, किसी भी लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो तुम ये जानते हो ना कि इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं अपन, हाँ। बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। बस इसी को ओके। यूज करके, यही है मेथड ऑफ कंपोनेंट। ओके। अब होगा अच्छा, कि उसको बस रीअरेंज कर दिया है। उसको बस रीअरेंज करना है। इस अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में जो तुम्हें दो वेक्टर दिए हुए हैं ए और बी, इसमें बी को तुम, एक तो बी का कंपोनेंट हो जाएगा इसके अलोंग, ए के अलोंग क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। हम्म, एक इसके ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि है बी साइन थीटा। हाँ, तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको एक्स बोला तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। हम्म, वेक्टर से पता होता है ना अपन को, डायगोनल इज इक्वल टू बेस बाई हाइट, हाँ। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, वैसे करके। और ये जो टेन फाई होगा वो क्या होगा, हाइट अपॉन बेस, उसी से ये फॉर्मूला आता है। पर ये एक्चुअली कहानी बन क्यों रही है, ये इसलिए बन रही है क्योंकि हम मेथड ऑफ कंपोनेंट यूज करते हैं यहाँ पे कन्वीनियंटली। मैं कोई लॉ नहीं यूज अच्छा। कर रहा हूँ यहाँ पे, पैरेललोग्राम वगैरह कोई लॉ यूज नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं बस ये मेथड ऑफ कंपोनेंट को यूज करके ही मैं करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है ठीक देखो, है। ये चीज होती है ना, ये फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ दिया है, ये बहुत कम जगह पे यूज होगा। अच्छा। मैक्सिमम जगह पे एक्चुअली जो मेथड ऑफ कंपोनेंट है ना, वही यूज होगा। तो एक्चुअली जब भी तुम न्यूटन्स लॉज में इक्विलिब्रियम वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फोर्सेस को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद तुमने जब दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो फिर उसके नेट रिजल्टेंट लेते रहो दो डायरेक्शन। मेथड ऑफ कंपोनेंट बहुत यूजफुल होता है। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा Kanishka, we were discussing actually the formal charge. In the last class, we have actually discussed this part, na? Loose dot structure drawing. In this class, we are doing formal charge. What is formal charge? Formal charge is used for calculation of the charge present on individual atom in a molecule. Okay. Now, the formula is formal charge is equal to total number of valence electron minus total number of non-bonding electron minus half into total number of bonded electrons. Now we'll take an example and I'll show you how to calculate the charge in the case of O3. Can you tell me, anyone, can you tell me, Aradhika or Kanishka, what is the total number of valence electrons in O3? ये हैं? सोचिए। सोचो। प्लूटोनियम 6 और टू में तो दो होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? दो। गलत। हाँ, टू में 6 होता है। अच्छा, नहीं, 6 होगा। 1s2, 2s2, 2p4 हुआ एक ना। सेकेंड रुको। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। O3 तो अ, O3 मतलब तीन अच्छा, ऑक्सीजन है। 3 है तो 18। 18 हो गया ना। हम्म। तो 3 × 6 18 हो गए, क्योंकि एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं। हम्म, लास्ट शेल में है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, 4 + 2 × 6 इज 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 18।
Now we have to make the Lewis dot structure of O3. Can you do it? Do it quickly and send me. फिर बनाया था वैसे। तो मैंने भेजा भी चेक करना। और हाँ देखता हूँ। हाँ ठीक है। फिर अच्छा तुम्हारा आ गया? ये कैसे बनेगा? हाँ सर ये तो आ गया। आ गया ना? हम्म। अभी देखो ये आया, दिस वन। Now you have to find out the formal charge on each atom. Suppose if I try to find out the formal charge of this oxygen I am doing, the arrowed one, use this particular formula. Total number of valence electrons for oxygen is 6. Total number of non-bonding electron is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay na? Minus half into total number of bonded electrons. Total bonded electrons for oxygen are 2 only. These two. This oxygen is bonded to 2 electrons. One bond. So ये cancel हो गया. Now it is minus half into 2. It will become minus 1. So the formal charge on this oxygen is minus 1. Can you similarly calculate the formal charge on other two oxygens? देख सो। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम के लिए 0 होगा एंड सेंट्रल वाले के लिए 1 होगा। +1. यस सर। हाँ करेक्ट.
राधिका तुम्हारा आया? यहाँ पे तो सॉरी, कनिष्का तुम्हारा आया? मैं तो निकाल के देखूँ। सर अभी कर ही रही हूँ। So I'll just be back in a minute. हाँ, क्या हुआ देखो कनिष्का, लेट मी शो यू। यस +1, total number of valence electron in this oxygen is 6, total number of non-bonding electron is 4 minus half into bonded electrons are 4, 1, 2, 3 and 4. So 2 minus 2, अरे it's 0 ना? राधिका ने गलत किया है। नहीं सर, मेरा 0+1 आ रहा है। डबल बॉन्डेड के लिए मेरा वो आ रहा है तो फिर डबल बॉन्डेड में 4 इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना? नहीं, 6 - 2, नहीं सॉरी, 6 - 4 -1/2 into 4। हाँ सही तो है। तो हाँ तो 6 ये में, तो 0 ही आ रहा है। हाँ, तो इस पे इस वाले पे 0 आ रहा है ना? ये नहीं, नीचे वाले पे 0 आ रहा है। हे 4 भगवान, तो नीचे पे है। इस वाले पे कैलकुलेट करो एक बार, देखो, इस वाले पे कैलकुलेट करो, देखो देखना, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4। अच्छा, तुमने लोन पे फिर गलत लगा दिया है, ये तो गलत बनाया है ना तुमने। नहीं, अरे भैया, जब इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके टोटल ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ ना, इस पे एक और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए नीचे? चेक करने का। इसलिए तो गलत आ रहा है। तुमने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। नहीं, कोई तो
ठीक है। मेरा तो +1 आ रहा है। हाँ तो उसका +1 ही तो है, मैंने और तो क्या बोला। तुमने तुमने जो स्ट्रक्चर भेजा है मुझे, स्ट्रक्चर तो सही है। उस स्ट्रक्चर में देखो ना मिस्टेक कहाँ है, मैं बता तो रहा हूँ। तो तुमने जो स्ट्रक्चर भेजा है हम्म, उस स्ट्रक्चर में बीच वाले सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं तुमने? एक दो तीन कनिष्का तुम भी चार देख रहे होगे ना ग्रुप में? 8, मिला के तो सब 8 बन रहा है। ओहो, तुमने अब ग्रुप खोलना। डिलीट नहीं करा है। हाँ, डिलीट करना भी मत। एक सेकंड रुको, कर ही देती हूँ। नहीं, डिलीट नहीं करना है। हो गया। मैंने सेंड, ओहो, तुम्हें पता चल गया तुम्हें मिस्टेक क्या थी? नहीं, तो फिर क्यों डिलीट क्यों किया? हो सकती है मैसेज। तुमने पता क्या मिस्टेक की थी? देखो बताता हूँ। बताइए, वापस भेजते हैं कैलकुलेशन के साथ, भेजते हैं। नहीं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस वो स्ट्रक्चर ही भेज दो। भेज दिया, नीचे करा हुआ है। शाबाश। देखो, हो जाओ भाई, हो जाओ। वो आराम से होगा। 100 और 102 मैसेजेस को सिंक कर रहा है वो। इतने सारे मैसेज कहाँ आ गए ग्रुप में? नहीं, आप लोड नहीं करते ना, कोड तो नहीं हो सकता। असल में मैंने आपको बहुत सारे डाउट्स भेजे थे, आई गेस। हाँ वो मैं, अरे मैं करता हूँ वो, मैं आज सॉल्व करके भेज दूंगा। मिस हो पा रहा है, मिस हो जा रहा है, कॉल ज्यादा हो रहे हैं ना। ये क्या भेजा है तुमने? ये क्या, ये वाला तो नहीं भेजा है। ये ओहो, तो ये बहुत लोड ही नहीं हो पहले रहा। का है। पहले का, अपने तो बहुत पहले लास्ट क्लास का है तो। हम्म। दिस मैसेज वाज रिलेटेड, एक और आया हुआ है। अब ये लोड क्यों नहीं हो रहा है? पूरा है सिंक हुआ यार। है। कनिष्का तुम देख पा रहे हो अपने ग्रुप में? अरे मैं बताता हूँ क्या है। ये देखो, ये क्या है। तुमने मिस्टेक क्या की थी मैं बताता हूँ। तुमने मिस्टेक ये किया था, यहाँ पर ना एक और लोन पेयर डाल दिया था। अभी भी डला हुआ है वो वहां पे। अच्छा, वो गलती से डाला था। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे पास, अगर तुम इस लोन पेयर को लेते 10 हो हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ समझ। 10 कहाँ से हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ जब एक और फिगर पर बना रही थी, मैंने सिर्फ ऊपर 2 डाले थे, वो गलती से डले हैं। कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है यहाँ पे। कुछ तो दाल नहीं, में काला है। नहीं, कुछ नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन बस एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं डाला है। ठीक है। अच्छा, ये -1 और +1 हो गया। इस वाले पे बट अगर तुम कैलकुलेट करोगे, बट कैलकुलेशन सही है मेरी तभी। कैलकुलेशन सही है, तुमने गलती से डाल दिए होंगे वो। हाँ इसलिए, वरना कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है ना। वरना कैलकुलेशन भी गलत हो जाती है ना। और दूसरा है, देखो यहाँ पर 6 0 है, माइनस, -2। हाँ, 4 अच्छा, 4 माइनस माइनस हाफ वन इंटू बाई टू 4। 4। 6 -4 -2 0। 0। ऐसे अपन फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। अब तुम लोगों का काम ये है कि तुम लोग मुझे बताओगे कि NO2 माइनस का, NO2 माइनस में फॉर्मल चार्ज किस किस पर क्या है? चलो मोस्ट ऑफ। पहले लुईस स्ट्रॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
सर, हम्म जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम होगा उस पे -1 का होगा, सेंट्रल नाइट्रोजन एटम पे 0 होगा, एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम पे भी 0 होगा। हाँ ठीक है, करेक्ट। ये उस वाले से याद, दो तो उसके दिख गए थे पुराने वाले से, क्योंकि अच्छा, वैसे ही पहले था। पहले भी बनाया था क्या अपन ने? ओके। खाली का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था सर, उस पे कर दिया। नहीं, फॉर्मल चार्ट तो सेम से ही है, O3 में भी ऐसे ऐसे ही थे, तो समझ गई थी कैसे करना। इस पे -1 है और बाकी पे 0 0। हम्म। तनिष्का, देयर इज नो डाउट ना? No, sir. Okay. Now, next move. Now you have known how to calculate the formal charge on each atom. Now let's move on to the next part. Next part is bond parameters. The first thing is bond length. What is bond length? Easy thing. When there is a bond, when suppose this is AB, this is a molecule in which there is only one bond, the length of this bond is supposed to be the bond length. And this bond length actually depends on many factors. Factors are how strongly the bonds are. More stronger the bond strength is proportional to the bond length. Okay, the more stronger the bond, the no, is inversely, should be inversely proportional to the bond. If bond is more stronger, the bond length will be smaller. So that is why if I give you 3 examples, like this is A triple bond B, here A is double bonded with B and A is single bonded with B, then what will be the order of bond length? Can you tell me? राधिका बताओ फटाफट। बॉन्ड लेंथ, तो ये होगा उल्टा, लाइक ए सिंगल बॉन्ड भी बड़ा होगा। यही तो बता रहे हो, ए सिंगल बॉन्ड भी सबसे बॉन्ड लेंथ। इनवर्स बॉन्ड लेंथ की प्रोपोर्शनल है बात ना। कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की नहीं। बॉन्ड हाँ, लेंथ तो सबसे बड़ी इसकी होगी, तब फिर भी ये उल्टा ही होगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें BS, बीएस की बात करोगे तो फिर ए ट्रिपल बॉन्ड भी ग्रेटेस्ट होगा। इसलिए क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड्स हैं। अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अपन ने पढ़ ही ली है, उसको जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। Bond strength is how strongly the bond is attached, how strong a bond is, that specify the bond strength for a bond. Now the third thing is bond enthalpy. In chemistry we use the term enthalpy for heat exchange. This is enthalpy is nothing but heat exchange. Later in your chemistry, later in your thermodynamics part, you will learn that whenever we are using this heat exchange, there we are using the term enthalpy, and this enthalpy is positive when the energy is absorbed and enthalpy is negative when the energy is lost. Okay, like that. But see, you have two kinds of thermodynamics. One is in physics, one is in chemistry. The chemistry
in chemistry, whenever you are studying the chemistry thermodynamics, there you will be using terms as enthalpy and all. Whenever you will be studying the physics thermodynamics, in physics thermodynamics, you'll be using the term heat exchange, not enthalpy, mostly. First, chemistry term. Bond enthalpy is actually, the definition is, it is the amount of energy required to break a bond. Or you can say, or amount of energy released when a bond is formed. So from this, you should get an idea. You should get idea whenever we have to break the bond, we need to supply energy to the bond, to the molecule. More the number of bonds, more energy you have to supply. So bond enthalpy will be higher. So bond enthalpy let's say BE. BE is actually directly proportional to the number of bonds or bond strength. Okay. We say bond enthalpy also we can say bond energy also. This is also same term. Bond, we can use say bond enthalpy as bond energy also. They both are same term. Now coming to the next part. Next part is bond order. So this one you will be studying later. We will not go deeper into this. What is bond order? BO. It is number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons by 2, where NB is what? Number of bonding electrons. Na is number of anti-bonding electrons. And now you'll be having some doubt that what is bonding electron, what is anti-bonding electron. We do not know anything about it. Let me say this, you will understand properly when you will study molecular orbital theory. There is a theory, the molecular orbital theory. Valence bond theory is there, and then molecular orbital theory is there. Molecular orbital theory actually says it actually explains about the bonding structure in the molecules. Rest all theories were fine up to whenever we were studying about the atoms. But when we come to the molecules, the actual number of bonds which are present inside a molecule and how they are present in the molecule between the two atoms, that actually everything is actually explained by the molecular orbital theory. And this you will understand. I'll not explain that one now, but you will understand in molecular orbital theory. Now, one more thing is what this bond order signifies. Suppose you are getting, in the case of oxygen, you will get the bond order as 2. What this signifies, whenever you have a bond order of 2 or bond order of 3, means for a nitrogen you will get bond order as 3. What this number signifies, this you will get by putting the values Nb minus Na by 2. You will later know how to find out the bonding electrons and non-bonding electrons, anti-bonding electrons. But what this number signifies,
it signifies the number of bonds present in a molecule. You must be knowing when nitrogen is there, in nitrogen the structure is N triple bond N. Here 3 bonds are there, that means its bond order is 3. In the case of oxygen, O double bond, O type of structure is there, number of bonds are 2, that's why the bond order is 2. Okay. अच्छा, देखो अब इसके बाद आते हैं VSEPR थ्योरी के ऊपर। थोड़ी कंफ्यूजिंग थी बैलेंस इसमें कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था? राइट। देखो इसमें है, कहानी बहुत सारी है, तो एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में चले गए थे। लेकिन एक्चुअली मैं बस इसका जो क्रक्स है ना वो बताता हूँ तुम्हें। Valence shell electron pair repulsion theory, why did it come into picture? Because by using the loose dot structure, we were able to draw the basic structure of a molecule, just showing the lone pairs also. After that, using the loose dot structure theory, we were able to calculate the formal charge also. And later, using the bond order also, we were able to calculate everything. But what was the problem? When we were drawing the structure, we were observing the structure of a molecule, they found that by using those above theory, loose dot structure theory and all those kinds of theory, we can only find out the number of bonds which are present inside a molecule and how the lone pairs are located. But what the geometrical structure of a molecule will be, they could not find out. So valence shell electron pair repulsion theory actually explains why the structure of a molecule will be geometrically as it is shown, as it is observed. Okay. Why the H2O molecules is, suppose we take H2O, HOH. If we draw this will be like this. There is no need for bending this molecule, but actually when we observe the molecule of H2O, it will be like this. H and H bend somewhat. Why this bending is there? This kind of bending was explained by the valence shell electron pair repulsion theory, and after that, the more geometrical explanation was given by the hybridization theory, valence band theory, valence bond theory. Okay, after this comes the hybridization theory, and that actually completely explained the geometrical structure of a particular molecule. This VSEPR theory actually told only one thing, its crux that I am telling you. There are 3 types of interaction in a molecule: lone pair, lone pair, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर bond pair, bond pair, and bond pair, lone pair. इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं, lone pair, lone pair. लोन पेयर फिर No. लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर बॉन्ड पेयर Now, what is, you need to understand what is a bond pair and what is a lone pair. This thing that they have shown, this lone, this is known as your lone pair. And these 2 electrons which are present here, they are known as your bond pair. Either this or this, they both represent your bond pairs. Now they said the VSEPR theory actually revolved around only one concept. The interaction between the lone pair is the repulsion. The repulsion, lone pair repulsion
is highest, then lone pair bond pair repulsion, then bond pair repulsion. So because here what is there? Here only one lone pair is there and one bond pair is there. So the repulsion between them and the repulsion between them is higher. The repulsion between bond pair and bond pair is low. So that's why repulsion between lone pair and bond pair is higher. So it will be bent like this. If repulsion between bond pair was higher, it would have moved to the other side. Okay, that's why the bending is there. Now in your after this, similar cases with NH3. In NH3 also the structure is like this: one nitrogen, three hydrogens. Now that is a different thing, that this nitrogen has tetrahedral structure. NH3 has tetrahedral structure. That is actually explained using your hybridization theory. But what this theory explained, because this lone pair is there, and the repulsion between the lone pair bond pair and lone pair bond pair is more than the bond pair, either this or this. So that's why the nitrogen hydrogen bonds are bent like this downwards, because the lone pair bond pair repulsion is always higher than the bond pair repulsion. That's why it is bending like this towards the bottom. Understood? Now you have to do one thing. In your chemistry, means your chemistry textbook of NCERT, they have given some list of molecules. There you try to see how this valential electron pair theory is being applied using this concept, and they have given explanation also. Just look at all those things, you will understand everything. Few examples are given, and in your examination, in your also JEE Main also, or in your chemistry board examination, class 11 examination, they may give some molecule and they may ask why the structure of this particular molecule is like this, why it is bent. Explain using VSEPR theory. There you will have to explain. So just refer that one, you will understand. Okay. So after this, let me explain you about the hybridization theory. Hybridization theory will come from the valence bond theory. Dipole Faison. Acha, let me tell you first about types of bonds. This is different and that is different. The earlier one we have studied, na? Do you know something about sigma bond and pi bonds? पता है? बॉन्ड भी होता है बट वो सिलेबस में नहीं है. सिलेबस में ही नहीं है? गामा बॉन्ड हो सकता है. सारा ऐसे सिंबल नहीं था. भाई, two types of bonds are only there. This you need to understand. Only two types of bonds are there. One is sigma bond and one is pi bond. What is sigma bond? Sigma bond is that type of bond which is formed by end-to-end overlap.
It is formed by sidewise over. How? I'll give you an example. See, first you need to understand what is the structure of an orbital. Orbital structure, orbital shape, not structure, it's shape. Orbital shape. Shape of an s orbital is spherical. Shape of p orbital is dumbbell. ये आपको पता है हाँ, orbital shapes. एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था. Shape of d orbital is double dumbbell. Double dumbbell. We also say this as low dumbbell. And shape of F is also similar to double dumbbell only, low dumbbell, but we rarely make use of it. Now, how the overlapping takes place? Suppose if I talk about sigma bonds, either it will be between SS or between SP or between PP. Three types of sigma bond formation can be done. How? If I talk about SS, it will be like this. Two s orbitals are there, spherical, and they are overlapping end to end. So because they have overlapped, this region is overlapped, and how the bonding will be formed? One electron which was present in the left orbital s was this. One electron which is present in the s orbital of right one is this. Now they have overlapped like this, one upon each other, and here two surfaces bonding like this. One electron is on the upper one electron is on the lower one. Since they are overlapping each other, this kind of bond is strong bond. P is sp. टाइम हो गया क्या? This is S, this is P. One electron from the left, one electron from the right P. Now they will bond and make a sigma bond. Similar third type is सिग्मा बॉन्ड ज्यादा ग्रेटर होते हैं पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड क्योंकि ओवरलैप से बनते हैं ना. पाई बॉन्ड साइड्स के इंटरेक्शन से बनते हैं, इसलिए वो वीक होते हैं. अच्छा, उसमें एरिया कम तो होगा. एरिया एक्चुअली एक के ऊपर एक ओवरलैप ही नहीं होगा. One electron from the left, one electron from the right, they are overlapping, they'll form a bond. This PP. Okay, this is sigma bond formation. Now coming to your pi bond formation, S do not form pi bond, only PP type. This contains only PP type formation. So how it is, when one bond is there like this along the y-axis of one atom A, and there is another atom B whose one more electron is there like this P. So
this will make a side by side overlap and one bond will be formed, and this is known as pi bond. This is very weak. Side by side interaction maximum, if the bond length is low, they will come side by side, means they will form like this. But only the sidewise interaction is there. This pi bond is, because this sidewise interaction is there, this is weak bond, not strong. Understood? This is sigma bond and pi bond, and in the next class we'll be telling you about the So, can you give a question based on this bond? bonds. There is any? So Average bond energy. Atomic size में तो F सबसे छोटा है, शेयर, तो on bond energy inversely proportional है ना bond length को. हाँ, जो इसका A पार्ट होगा क्योंकि एटॉमिक साइज में F सबसे छोटा है, चलो फिर एंड करते लेंथ हैं ना। से रिलेट होगा. ठीक है, Cf का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है ना, तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, फिर Cl, फिर Br, फिर I. मैंने ऐसे करा, एटॉमिक साइज में आयोडीन सबसे ज्यादा था और क्लोरीन सबसे कम, तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन लेके कर दिया. ऐसे ही कर सकते हो। अरे वो मुझे एनर्जी का नहीं पता था, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं, वो भी ठीक है। एटॉमिक साइज का पता था. ठीक है, चलो एंड करते हैं। बाय सर. बाय बाय।